दिल्ली अटैक को लेकर आरएसएस नेता राम माधव ने बड़ी बात कह दी है। जी हां, फरीदाबाद से सामने आया आतंक का डॉक्टर वाला रूप इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मॉड्यूल के तहत दिल्ली के लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता राम माधव ने कहा कि इस घटना ने आतंक से जुड़े बहुत सारे मिथकों को तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह धारणा बनी हुई है कि शिक्षा का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, ये गरीबी का परिणाम है। इस घटना ने साबित कर दिया कि आतंकवाद का शिक्षा या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक धारणा, एक सोच का परिणाम है। संघ के नेता ने कहा कि किसी एक धर्म को पूरी तरह से आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन एक ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवादी का धर्म होता है। उन्होंने कहा, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के मामले का मुख्य आतंकी अपने कुकर्मों को सही ठहराने के लिए कुरान की आयतों का हवाला दे रहा है। हम माने या ना माने, आतंकवादियों की धार्मिक प्रेरणा होती है, इस बात को अब और नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमें इस बात को अब नकार देना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग आतंकवादी नहीं हो सकते। दुनिया ने देखा है कि ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अल जवाहिरी डॉक्टर था और आतंकवादी भी था। उन्होंने कहा कि हमें इस बात को भी खारिज कर देना चाहिए कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, हम किसी एक धर्म को पूरी तरह से आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ सकते, लेकिन इतना तय है कि एक आतंकवादी का अपना धर्म होता है। लोग धार्मिक आधार पर आतंक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस मुद्दे को लेकर अब तार्किक तरीके से सोचना होगा। संघ के नेता ने आतंकवादियों को भटका हुआ नौजवान बताकर बचाने वाले लोगों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप आतंकवाद को यूं ही नकारते रहेंगे तो आप फिर वही पुराना बचाव वाला और माफी मांगने वाला प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम सभी को इसका खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए। हमारे लिबरल बुद्धिजीवी और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी इन बातों को खुलकर सामने आना चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरी बात फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। इसमें इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। लाल किले के पास कार में आत्मघाती हमला करने वाला भी आतंकी उमर एक डॉक्टर था। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। Recently we saw a terrible attack on Delhi in Red Fort, and after that we saw a series of seizures and series of linkages which are very alarming. We are seeing white collar terrorism for the rare, which is very rare in India. Doctors involved, others professionals are involved. Recently media house was also raided in Kashmir. A large quantity of ammonium nitrate, which is an explosive substance, was recovered. Do you see this as a alarming situation, and how do you see India should tackle it? There are so many myths and illusions about terrorism. This incident, Red Fort incident, has shattered several of them, at least now. Globally, the experience is education has nothing to do with terrorism, or poverty has nothing to do with terrorism. It's not poverty which is the issue. It is the motivation, commitment that is the issue. Terrorism is not a product of poverty. Terrorism is a product of conviction. If you are convinced that I have to follow certain statements of my religious text, you will indulge in terrorism. So first and foremost, we should debunk that theory that educated people don't indulge in terrorism. Osama bin Laden was an engineer by education, and his number two, Al Jawahri, was a doctor by profession. So this is all a bogus theory. Secondly, this old cliched statement that terrorism has no religion needs to be revisited. Terrorism per se, you cannot probably brand one religion fully as terrorist. Everybody in that religion is terrorist. But terrorist has religion. In this case, he clearly stated the main terrorist in this case, he cited the Quranic verses to justify his acts. So please don't go back to those things. So terrorism or terrorist has certain religious motivation. This also cannot be denied anymore. If you continue to do that, you are doing the same old defensive propaganda, apologist propaganda. We have no dearth of such intellectuals in our country. But it's time both the Indian liberal intelligentsia and India's Muslim intelligentsia come out very openly about these things, that education or poverty has nothing to do with. Secondly, religion can be used for these purposes by certain misguided people. But at the same time, on the other side, colleagues from my side, I tell them only one thing. Yes, religion can be a motivation for some people to become terrorists, but that doesn't mean all people of that religion are motivated by same kind of terrorist ideas. But profiling is bad, no? But profiling is wrong. So, no, profiling means what? Here is a clear-cut case
that somebody is using his religion to justify killing 13 people. And today the debate in the studios is whether we should blame entire religion or whether we should blame only few people. What about those 13 guys who died? What about their families? Are we talking about that? So be realistic in this discussion, because it is time we have to seriously ask people to introspect, people to do necessary things so that we have seen a university being a bedrock of this, the entire hotbed of this terrorist Al-Falah University. There, whatever legal actions have to be taken are being taken. If that education institution is not putting necessary checks and balances, it has to be answerable, and I'm sure legal institutions are working on those issues. जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।